Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 5th and 6th of October. The session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till the end. In this we are talking about cabinet approvals, then we are talking about Navi Mumbai Airport has been renamed after DB Patil ji. We will be discussing it. Then we are talking about Tamil Nadu government. They have partnered with recently with an organization, right, and with a country basically. And it is for what? It is for India's first Sport Tech Incubation Center. What is this incubation center? We will be discussing it. Then we are talking about Chhattisgarh's Balod. It became India's first child-free district. We discussed this few days back also, and now in this it will be discussed in a more detailed way. So all these things and many more will be discussed here, so stay tuned with us till the end. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs, students. We will be first discussing some important approvals. Four approvals we will be discussing it. First of all, remember the Union Cabinet, it is chaired by whom? It is chaired by Prime Minister Narendra Modi. This is his third term as the Prime Minister of our India. Right, let's start with the first approval. First is the Phase 3 of BRCP. What is BRCP? Biomedical Research Career Program. It is expected to be implemented for a period of 6 years. That will be starting from 24 to 26 to 2030, 24, 25 to 2030, 2031. Right? I correct myself. It is from 25, 26 to 2030 to 2031. Right? And then it is expected that further for 6 years again it will be extended. So this is the first approval here. And what is the main aim of this initiative? And what is the aim here? It is basically a wellness program, right? The focus here will be on the biomedical research career program, how we can enhance the research and development, how we can promote the career for multiple students, right, in this particular biomedical field. This is your first approval. Second approval is the widening and the improvement of the Kalibor-Numaligarh section of the National Highway 715, that is in Assam, to 4-lane national highway, right? So it will be extended to 4-lane national highway, and here budget is of 6,957 crore rupees. Length here is of 85.675 kilometer. This is your second approval. Then moving on to the third approval, it is opening of 57 new Kendra Vidyalayas. These Kendra Vidyalayas, these are your schools, KV schools, right? Approved by CECA. And what is the estimated cost that will be here? 5,862 crore rupees. Then fourth approval is for the dearance allowance hike for the central employees, right? It has been increased by 3% recently. Correct? Take a note of this. So the DA, that is dearance allowance, and DR is for the, that is dearance relief. It is for the pensioners, right? It has been increased by 3% recently. So these are the four approvals that you need to remember here. Correct, students? Then apart from this, India and Brazil, they have launched Maitri 2.0. This will be boosting the agriculture innovation, correct, and food security. Then India and Morocco, right? They have signed an MOU for defense cooperation. Next is Maharashtra government. They have announced Navi Mumbai Airport that has been renamed after DB Patil ji, right? Take a note of this. New name of this airport will be Loknete Dinkar Balu, that is DB Patil Navi Mumbai International Airport, right? This is the new Navi Mumbai International Airport that has been renamed to DB Patil Navi Mumbai International Airport, and this is to honor DB Patil. Take a note of this. Important, students, can be asked in the exam that which is the airport in Mumbai or in Maharashtra that has been recently renamed, right? It is renamed as New Navi Mumbai International Airport, renamed to DB Patil Navi Mumbai International Airport. Other airports are also in pipeline that can be renamed. We will be discussing them later on. Then 29th edition of the COCSSO
Your homework is to give me the full form here, right? So 29th edition of this COC SSO 2025 was held where? It was inaugurated in Chandigarh, right? This is to strengthen the local level governance. Correct? Important. Then India has recently added how many new wetlands, and the total 2 more wetlands to the Ramsar sites. So these wetlands are in Bihar. We have discussed this earlier. You have to give me the site names, 2 site names that are in Bihar, right? And the total number is 93. Okay, let me give you the answer only. The 2 wetland sites that in Bihar are Gokul, Jalashay and Udaipur Jheel. I repeat, Gokul, Jalashay and Udaipur Jheel, they both are in Bihar, and these are the wetland sites added to the Ramsar list, and now there are 93 total Ramsar sites from India. Next is Tamil Nadu government. They have partnered with Borussia Dortmund to launch India's first sport tech incubation center. I repeat, this is Borussia Dortmund. It is a German football club, and they have established India's first dedicated sports technology incubation center. Where? In Tamil Nadu, right? What this will do is this will be promoting the sport football, right? Here you will be seeing that sports technology incubation center. Incubation center is basically a place where various startups come, right, and they work upon a particular technology or a problem, right? These startups here are funded. These startups here are provided with mentorship. Here they are provided with various investment, mentorship, and also with skilling, and right marketing approach is also provided to them. Correct? So they have launched India's first sport tech incubation center, where in Tamil Nadu. Location is important here. Very important, students. Then it is UP, that is Uttar Pradesh state, that is to organize the statewide trade shows. Statewide trade shows. It will be from 9 to 16th of October, right? Then apart from this, it is Dubai. They have recently announced a 15-kilometer dedicated road for the driverless vehicles, right, and marine transport. Another important and interesting news. Next, Chhattisgarh's Balod became India's first child marriage free district. So what does this mean? Is it is child marriage free. That means all the individuals, for boys it is 18 plus, right? So here the people are not marrying their children's, their daughters, their sons below this age, right? So what this is promoting is that we are now, because earlier we used to see this, right? Earlier we used to see this, that children were married, which is not good at all. So now we are seeing that Balod in Chhattisgarh, it became India's first child marriage free district. Correct? And this child marriage free India, this was a campaign launched by Prime Minister Narendra Modi on 27th of August 2027, and it is to eliminate the child marriages. If we talk about this Balod district that is in Chhattisgarh, it consists of 436 gram panchayats and 9 urban local bodies here. Correct? They have been granted here, and it was in support with UNICEF. Very important. Then apart from this, students, remember Indigo and State Bank of India, they have launched a co-branded credit card. Apart from this, SBI, State Bank of India, they have also partnered with Winfast, right? And why? They have partnered here with for promoting or for financing their electric vehicles. Then apart from this, Vandana Gupta, right, takes charge as the Controller General of Communication Accounts. Then Amita Chaudhary, she became the first woman of Indian origin to chair the UNEP, United Nations Environment Program F1 Global Sustainable Insurance Board. Amita Chaudhary, first woman. Next, Thomas Cook India, they have signed an MOU with Ministry of Tourism for the traveler feedback. Thomas Cook India Limited, right, that is TCIL, they have signed this MOU with the Ministry of Tourism in order to collect the real-time traveler feedback to evaluate the India's destination performance, right? That means in India, when foreigners come, they travel here. So what they now this MOU is doing is that they want to collect the feedback from those travelers, and they want to understand that how good India is in terms of traveling, right? Are the people here good? Are the cleanliness right here? Is safety a
real thing here, right? Accessibility of various services, is that a thing here, right? So a proper feedback form has been established, and this Thomas Cook India, right, they provide various travel services for foreign exchange and foreign personals. So now they have partnered with Ministry of Tourism, and they will be collecting feedback about various standards of India, that what are the things, right, that are good and bad in India that we can improve, and also a proper check will be maintained through this, right? And basically all these feedback will be from the foreign nationals, and this MOU has been signed for the next 3 years. Next, students, next is international affairs. We are talking about the 42nd ICAO, that is International Civil Aviation Organization Assembly. This was held in Montreal, Canada. Where was this held? It was held in Montreal, Canada. This is the location that you need to remember. And which edition? It is the 42nd edition of this ICAO assembly. It was held from 23rd of September to 3rd of October. 23rd of September to 3rd of October, right? Here 192 member states were participating, correct? And India here was represented by whom? Our country India was represented by Ramesh Kumar. He is the Secretary of the Ministry of Civil Aviation. Apart from this, during this 42nd ICAO assembly, 36 member councils elected for a period of 3 years. Part 1, Part 2 and Part 3 here you can see, and India here is in the Part 2. Important, take a note of it. And here only remember, African Civil Aviation Commission, right? That is the African Civil Aviation Commission and their partner, right? They have received the Edward Warner Award. They have received Edward Warner Award. Just remember who received this Edward Warner Award. It was the African Civil Aviation Commission. Apart from this, as we saw, India is in the Part 2 here. So India re-elected to the Part 2 of the ICAO Council, securing more votes than in 2022, and it is highlighting India's rising global aviation influence, correct? In this tenure, India will focus on strengthening international aviation safety, security and sustainability, promoting equitable growth in air connectivity, advancing technology, aviation, and supporting the ICAO's No Country Left Behind initiative. Right. Another important thing, this is the 42nd ICAO assembly, held where? Held in Montreal, Canada. And who received the Edward Warner Award? It is African Civil Aviation Council. Moving on, students, to the next topic. It is overview of the World Social Security Forum. Right. This was held where? In Kuala Lumpur, Malaysia. Another important thing, where was the World Social Security Forum 2025 held? It was held in Kuala Lumpur, Malaysia. It was organized by whom? It was organized by International Social Security Association. International Social Security Association. It was held from 29th of September to 3rd of October and held where location? It is Kuala Lumpur, Malaysia. This was held in under a particular theme, students. Theme being shaping social security for a world in transition. This is important, right? Here focus will be on enhancing the social security, right? And here India, our country, has received a award, that is ISSA Award 2025 for outstanding achievement in social security. And why India received this? Because we are working towards a transformative efforts, or we are having a transformative efforts in social security coverage. Even our country India is focusing on an initiative, that is insurance for all by 2047. That is to provide insurance for all the individuals by 2047 and have a deep penetration even in the rural areas. And here you can see Dr. Mohammad Azman has been re-elected for the PERSCO, and Treasurer John Mark Vandenberg has been re-elected here as the Treasurer. Also, this event has witnessed a participation of over 2000 delegates from more than 133 countries. Moving on. Next is RBI has granted the SRO status to Finance Industry Development Council, that is FIDC. Now, what is this SRO status basically? What is the main aim of it, and why this SRO is given to a particular organization, right? This SRO is given basically to enforce a code of conduct. It will ensure regulatory compliance and also will adhere to the RBI's guidelines. I repeat, SRO, that is your self-regulatory organization status. It has been granted to FIDC, that is Finance Industry Development Council, granted by Reserve Bank of India. And why it has been granted? This will ensure the code of conduct. The code of conduct, it will ensure the regulatory compliance.
that the companies organizations are following the regulatory compliance and will also adhere to the RBI guidelines in various sectoral issues, right? This FIDC, that is Finance Industry Development Council, it represents nearly 400 NBFCs, right, with SRF membership voluntary for eligible members here. Here you can see Raman Agarwal, the Chief Executive Officer here. Previously he was the Director of FIDC, now CEO of FIDC has been appointed here. Correct. So far, 2 microfinance companies has been recognized as SRO, that is Sadhan and MFIN, that is Microfinance Network and Fintech Association for the Consumer Empowerment. They have been granted here as the SRO in the financial sector, that is your fintech sector here, right? So take a note of this. Who granted this SRO status? Granted by RBI to FIDC. The FIDC is for NBFC sector and it will ensure code of conduct and ensure the compliances here. Take a note of it. Here only, students, if I ask you who has been appointed as the new Chief Financial Officer of IndusInd Bank, Viral Damania ji. Then who has been appointed as the new Director General of ITBP, Praveen Kumar. For Director General of CISF, Praveer Ranjan. And for Director General for ITBP is Praveen Kumar. Next is RBI imposes penalties on American Express Banking Corporation and HDB Financial Services for non-compliance here, right? Directly remember these 2 organizations has been granted the or have been imposed penalty upon. For MX, that is American Express, the penalty is 31.8 lakh rupees, and for HDB Financial Services it is 4.2 lakh rupees. Then apart from this, if I ask you who has been appointed or reappointed as the Attorney General of India for the next 2 years, his term has been extended, Venkataramani sir, right? Then apart from this, who has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer for 3 years for Tata Motors, Shailesh Chandra has been appointed here as the MD and CEO for Tata Motors for the next 3 years. Moving on, students, next is economy and business. Zomato and HDFC Pension, they have launched a NPS model for the delivery partners, right? These are the gig workers here. So Zomato, they collaborated with HDFC Pension Management Company Limited and has launched the NPS platform workers model under PFRDA supervision, right? This initiative will provide structured retirement planning for the gig based delivery partners and integrate them into the formal financial ecosystem, right? Take a note of this. And it is expected that 1 lakh partners will be added here into this by 2025 end. This model will ensure portability of pension accounts, allowing the delivery partners to retain the benefits even when shifting jobs or platforms. And within 27 hours, within 72 hours, over 30,000 delivery partners generated their permanent retirement account number, that is your PRANs, right? And it is expected to onboard 1 lakh partners by December 2025. Correct, students? Then apart from this, Iron Beam, right? This is to strengthen the missile system. It is a laser based system launched by Israel. Iron Dome is also of Israel. Then Defense Ministry, they recently gave a contract worth 62,370 crore rupees to Hindustan Aeronautics Limited, and it is for the fighter jets. Next is science and technology. Good Luck India, they have recently signed a memorandum of understanding with BATL and Exit for AMCA program. What is this AMCA? Advanced Medium Combat Aircraft program, right? So Good Luck India, they signed this tripartite memorandum of understanding. Here you can see first, second and third. These are the 3 organizations that have signed this MOU for Advanced Medium Combat Aircraft program. Here you will be seeing that fifth generation stealth fighter jets will be manufactured, right? They will be done research and development here, right? Research and innovation will be done here and they will be designed and developed here. Take a note of it. Then apart from this, students, remember recently India has won the SAFF Under 17 Championship. This is the 7th edition of it, and we have beaten Bangladesh by 4-1 in the penalty shootout, right? This SAFF, it is related to football. Then our country India has won 7 medals
at the Para World Archery Championship. And our country, India, has also won the 9th Asia Cup title by defeating Pakistan in the final. The final was held in Dubai, and this Asia Cup is related to which sport? It is related to cricket. Next is important day, students. World Animal Day observed on 4th of October, and this day is to observe basically to increase highlight the importance of animals and raise the awareness for their welfare. This year it was the 100th anniversary of this day, observed first time in 1925. Theme here is Save Animals, Save the Planet. Next, National Wildlife Week observed from 2nd to 8th of October. This week is also observed basically to increase the awareness about the wildlife conservation and protect India's rich biodiversity. This time it was the 71st National Wildlife Week that was observed here, and Seva Parv is the theme. Next, World Space Week from 4th to 10th of October, and we know that space is the sector that is booming now. We want to go to space, we want to colonize Mars, we want to colonize even moon, where we want to build various bases also for future missions, right? So space is the new topic, right? So living in space is the theme here. Living in space for World Space Week observed from 4th to 10th of October. Important, students. Then apart from this, remember, if we talk about Antyodaya Divas observed on 25th of September, World Pharmacist Day observed on 25th of September, World Maritime Day observed on 25th of September, and on 26th of September we observed European Day of Languages. Then on 26th of September we observed World Environment Health Day, right? And also International Day for the total elimination of nuclear weapons. Remember these days. Next is state news. Maharashtra government has launched e-bond system for import and export transaction. I repeat, it is the Maharashtra government. They have launched this electronic bond or e-bond system for high value import and export transactions. This will replace the traditional paper-based stamp bonds. With this, Maharashtra became 16th state in India to adopt the digital system. Direct question can be asked, which is the 16th state in India that has adopted the digital system and have launched e-bond system, that is the electronic bond system. It will be for the import and export transactions. Direct question will be asked here. Here facilities of e-signature, real-time verification, and it will replace the 500 rupees paper stamp bonds digitally. Right, so these are your important current affairs for the day, students. Now let's move to the revision part. It will be quite beneficial for you all. Who won the first ever chess esports World Cup organized by the Esports World Cup Foundation in August in Riyadh, Saudi Arabia? This is the location, and it was the inaugural edition, that is the first ever edition of the chess esports World Cup. So it is Magnus Carlsen, the world's #1 chess player, has recently won the title here, and he was awarded with a cash prize of $250,000 US. Next, in August, the Indian men's and women's table tennis teams qualified for the World Table Tennis Championship, scheduled to be held where? It is scheduled to be held in London. Right? It is scheduled to be held where? In London, UK. And here, there were, remember, India, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and Maldives. They comes under the region, South Asia region team. Next, who won the 40th edition of the Hungarian Grand Prix, right? That was held in Hungary in August. So Lando Norris has won the 40th edition of Hungarian Grand Prix. He drives for McLaren, right? Important. Next question. Where did India Open World Athletics Continental Tour bronze meet held, where India marked the first ever hosting of the event? So where did Indian Open World Athletics Continental Tour held? It was held in Bhubaneswar, Odisha. It was held in Bhubaneswar, Odisha. And this was a one-day meet. It featured over 150 athletes from 17 countries, and the total prize pool here was of $25,000 US. Next, who won the bronze medal in the men's individual compound archery at the World Games 2025 held in Chengdu, China in August 2025? So Rishabh Yadav. Right, Rishabh Yadav won the bronze medal here. And these World Games, students, remember, these World Games
are held every 4 years since 1981. Next, for which of the following events did India under-20 women's football team qualify by defeating Myanmar in the final Group D qualifying match held in Yangon, Myanmar in August 2025? So it is AFC Under-20 Women's Asia Cup 2026. Right? For this event, did India's under-20 women's football team has qualified by defeating Myanmar in the final Group D qualifying match. Next, in August, 19-year-old S. Rohit Krishna officially became India's dash chess grandmaster. So he officially became India's 89th chess grandmaster after earning his final grandmaster norm and achieving the International Chess Federation rating 2516. Next, the inaugural Khelo India Water Sport Festival in Jammu and Kashmir was scheduled to be held at dash from 21 to 23rd of August. So it was scheduled to be held at the Dal Lake. Right? And the logo here features Shikara. What is Shikara? Shikara is a houseboat. There are multiple houseboats in the Dal Lake. So the logo features this Shikara on the Dal Lake, right? And it is Dal Lake or in Srinagar where these event was scheduled to be held. That is Khelo India Water Sports Festival. Where is this Dal Lake? It is in Srinagar. Next, chess grandmaster Winston Kmare, who won the Quant Box Chennai Grandmasters held in August in Chennai, Tamil Nadu. He hails from which country? He hails from Germany. Next, Spanish Marc Marquez representing Dash team won his first ever Austrian Grand Prix title MotoGP 2025 Austrian Grand Prix held in Spielberg, Austria in August 2025. So he represented Ducati Lenovo. Next, who clinched the top medal at the two prestigious International Table Tennis Federation World Para Table Tennis events held in August in Washington, USA. So, who clinched the top medal? It was clinched by Bhavina Patel. Next is where was the 18th edition of the International Olympiad on Astronomy and Astrophysics, an annual competition in astronomy and astrophysics for secondary school students held in August. So, it was held in Mumbai, Maharashtra. Next, in August, where did India host the Asian Short Track Speed Skating Trophy for the first time, the biggest international winter sport event? So, where did India host the Asian Short Track Speed Skating Trophy? It was in Uttarakhand. Next, veteran Indian cricketer Chestewar Arvind Pujara, who announced his retirement from all the forms of Indian cricket in August, holds the record for 525 balls, that is the most balls faced by an Indian in a test inning. Next, mention the team that has won the Durand Cup trophy by defeating Diamond Harbour Football Club in the final match of 134th edition of the Durand Cup. Now, this question can be also asked that this Durand Cup, it is related to which sport? It is related to football. Which edition of Durand Cup was held in 2024 recently? It was 134th edition of the Durand Cup was held. And who won? It was won by Northeast United Football Club and they defeated Diamond Harbour Football Club in the finals. Next, identify the correct statement regarding the 90th edition of the World Youth Archery Championship to be held in August 2025. So, identify the correct statement among the following. B is right, C is right, A is wrong. It is saying that this World Youth Archery Championship, it was organized by the World Archery in Lausanne, Switzerland. Was it? So, it was organized by World Archery in Lausanne, Switzerland, right? No. Lausanne, Switzerland, the World Archery has their headquarters in Lausanne, Switzerland. But this event was organized by World Archery, where it was held in Winnipeg, Canada. Winnipeg, Canada. Right? Because in Lausanne, Switzerland is the headquarters of World Archery. Don't mix it, don't confuse. Next, players Dharamveer and Preeti Pal were chosen as the flag bearers of the Indian contingent for which championship going to be held in Delhi. So for Commonwealth Para Athletes Championship 2025. Next is Julian Weber representing which country finished first in the Diamond League for the javelin throw held in Zurich, Switzerland, where Indian Olympian medalist Neeraj Chopra finished second position. So it was in Germany. Right, and Julian Weber with 85.01 meter throw. This was the throw for Neeraj Chopra.
Right, for Julian Weber, the throw was 91.57 meter and he clinched his first Diamond League trophy, and the event was held where? It was held in Zurich, Switzerland. So these were your current affairs related to sports, students. Next, students, is our homework section. First question is, tell me who has been appointed as the new BCCI president. Second question, tell me recently which edition of Asia Cup was won by India and who won the trophies here, right? Various trophies. Say for example, who won the best player of the match, man of the tournament, right? Give me those. Third question, which edition of Indian Defense Service of Engineers Day was observed recently, right? Tell me that. Which edition of which was observed recently? Then fourth question, recently one Indian Coast Guard ship, right? That is the first Adamya class. That is the first Adamya class fast patrol vessel. Correct, that was commissioned at Paradip port. Name that. Name that Indian Coast Guard ship. Then fifth question, tell me recently when do we observe World Bamboo Day? When do we observe International Equal Pay Day? When do we observe World Cleanup Day? And when do we observe World Alzheimer's Day? So these are your homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में कैबिनेट अप्रूवल्स डिस्कस करेंगे। देन नवी मुंबई एयरपोर्ट को रीनेम करके डॉक्टर डीबी पाटिल जी के नाम के बिहाफ पे रखा गया, उसको डिस्कस करेंगे। देन तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोर्सिया डॉर्टमुंड, जो कि एक फुटबॉल क्लब है, इनके साथ पार्टनर किया। किसके लिए? स्पोर्ट टेक इंक्यूबेशन सेंटर बनाने के लिए। देन छत्तीसगढ़ की बलौड डिस्ट्रिक्ट, राइट, ये इंडिया की पहली चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बन गई है। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सारी चीजें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा काफी सारी और न्यूज है, काफी सारे वन लाइनर्स हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, जो आपके लर्निंग में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स। सबसे पहले यूनियन कैबिनेट किसके द्वारा चेयर की जाती है? इट इज चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इनका ये थर्ड टर्म रहेगा। सो अगर हम अप्रूवल्स देखें, 3 अप्रूवल्स यहाँ पर, 4 अप्रूवल्स हमें याद रखने हैं। पहला अप्रूवल आ जाता है फेज 3 ऑफ द बीआरसीपी। बीआरसीपी क्या है? बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम। इससे करियर को ऊपर फोकस किया जाएगा इन द बायोमेडिकल सेक्टर, राइट। बच्चों को यहाँ पे स्किलिंग प्रोवाइड की जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, राइट, एंटरप्रेन्योरशिप, इवन इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो फर्दर इस सेक्टर में अपनी जॉब बना सके, अपना करियर बना सके। 1500 करोड़ की लागत से ये इनिशिएटिव एक्सटेंड किया गया। फेज 3 है, 6 साल के लिए रहेगा। 25-26 से लेकर 30-31 तक रहेगा। फर्दर बोला जा रहा है कि 6 साल तक इसको फिर से एक्सटेंड करने की बात की जाएगी, तब 37-38 तक, राइट। ये था आपका पहला अप्रूवल। सेकेंड अप्रूवल आ जाते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड अप्रूवल आपका वाइडनिंग ऑफ एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द कालीबोर नुमालीगढ़ सेक्शन ऑफ द नेशनल हाईवे 715, जो कि असम में है। इसको 4 लेन का नेशनल हाईवे बनाने की बात की गई। 6,957 करोड़ की लागत से 85.675 किलोमीटर का ये पैच रहेगा। ये सेकेंड अप्रूवल है। थर्ड अप्रूवल पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। ये है आपका ओपनिंग ऑफ 57 न्यू केंद्रीय विद्यालय। ये आपके स्कूल्स होते हैं, राइट, केवी, एंड 5,862 करोड़ की लागत से इसको अप्रूव किया गया है। चौथा अप्रूवल आ जाता है स्टूडेंट्स हमारा कि जो हाइक किया गया है डियरेंस अलाउंस, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए डियरेंस रिलीफ होता है पेंशनर्स के लिए। तो 3% का यहाँ पर हाइक हमें देखने को मिला है अभी रिसेंटली। डियरेंस अलाउंस एंड डी मतलब सैलरी यहाँ पे अब आपकी सेंट्रल एम्प्लॉयज की, एंड पेंशन जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं उनकी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखेगी, मार्क करेंगे। फिर इसी के अलावा स्टूडेंट्स इंडिया एंड ब्राजील, इनके द्वारा लॉन्च किया गया अभी रिसेंटली मैत्री 2.0। ये मैत्री 2.0 बेसिकली एग्रीकल्चर इनोवेशन के लिए है। एग्रो सेक्टर, एग्रो इनोवेशन के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाएगा। इंडिया ने ही मोरक्को के साथ भी अभी पार्टनर किया। ये जो एमओयू था, ये डिफेंस सेक्टर में हमें एमओयू देखने को मिला, ठीक है। चलिए, फिर इसी के अलावा IILM यूनिवर्सिटी, ये गुरुग्राम में है। इन्होंने अभी रिसेंटली अटल इनोवेशन मिशन के साथ यहाँ पे पार्टनर किया, एक्सपीरियंस लर्निंग के ऊपर काम करने के लिए, MSME इनोवेशन के ऊपर काम करने के लिए इंडिया में। नेक्स्ट,
देन महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इन्होंने अभी अनाउंस किया कि ये नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम चेंज करके क्या कर रहे हैं, डीबी पाटिल नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो नया जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अब उसका नया नाम क्या है, डीबी पाटिल नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कई एयरपोर्ट और यहाँ पे फर्दर पाइपलाइन में है जिनका नेम अभी हमें चेंज होता हुआ देखने को मिल सकता है। इसी के अलावा अभी रिसेंटली याद रखेंगे गवर्नमेंट ने जेप्टो के साथ पार्टनर किया ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई जा सके। देन यूपी की बात करें, इन्होंने होस्ट किया 19th एडिशन ऑफ द नेशनल जॉम्ब्रे ऑफ भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, कहां पर, लखनऊ में। फिर इसी के साथ साथ इंडिया को इलेक्ट किया गया कहां पर, टू द इंटरपोल एशियन कमिटी, जिससे रीजनल लॉ एनफोर्समेंट काफी बढ़ता हुआ हमें दिखेगा, ठीक है। फिर 29वां COCSSO, ये हमने डिस्कस किया था, इसका होमवर्क है, आप मुझे फुल फॉर्म बताओ ये क्या होता है, राइट। तो इसकी कॉन्फ्रेंस हुई, इनॉग्रेट कहां की गई, चंडीगढ़ में इसको इनॉग्रेट की गई, लोकल लेवल गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट, इसी के अलावा अभी इंडिया से 2 नई वेटलैंड साइट्स को ऐड किया गया टू द रामसर साइट्स। टोटल रामसर साइट्स इंडिया में 93 हो गई हैं। ये जो 2 साइट्स ऐड की गई हैं ये बिहार से साइट रहेंगी, एक है गोकुल जलाशय एंड दूसरा रहेगा उदयपुर झील। ये दोनों कहां पर है, ये बिहार में है एंड इन दोनों को रामसर साइट्स के तौर पे ऐड किया गया है। दोनों वेटलैंड्स है, 93 रामसर साइट्स हो गई हैं अब टोटल इंडिया की, ठीक है। फिर इंडिया का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो कि हिमाचल प्रदेश में है, उसको यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क में भी ऐड किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसी के अलावा आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा अभी रिसेंटली प्रयास, ये क्या है, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर है, बच्चों के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर है जिनको दिमाग के मेंटल इश्यूज हो जाते हैं। ये कहां पर रहेगा, IIIA गोवा में, प्रयास नाम से। नेक्स्ट, तमिलनाडु गवर्नमेंट, इन्होंने भी पार्टनर किया बोरुसिया डॉर्टमंड, ये एक फुटबॉल क्लब है एंड इंडिया का पहला स्पोर्ट्स टेक इंक्यूबेशन सेंटर यहां पे लॉन्च करने का काम किया गया। देखो इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है, जहां पे स्टार्टअप्स को एक प्लेस प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपने वेंचर के ऊपर काम कर सकें। यहीं पे उनको मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाती है, उनको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराई जाती है, उनको स्किलिंग की जरूरत है वो प्रोवाइड की जाती है, मार्केटिंग की जरूरत है वो प्रोवाइड की जाती है, मतलब उनको अपने स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए जो भी चीज की जरूरत है वो एक इंक्यूबेशन सेंटर में प्रोवाइड की जाती है। एंड ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंक्यूबेशन सेंटर रहेगा जहां पे गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने बोरुसिया डॉर्टमंड जो कि एक जर्मन फुटबॉल क्लब है, इनके साथ पार्टनर किया है ताकि स्पोर्ट्स सेक्टर में जो स्टार्टअप्स हैं उनको ग्रो किया जा सके। फिर यहीं पे याद रखेंगे यहीं पे याद रखेंगे दुबई के द्वारा एक 15 किलोमीटर का पैच यहाँ पे डेडिकेट किया गया ड्राइवरलेस व्हीकल्स के लिए, राइट। मतलब ऑटोमेटिक जो व्हीकल्स चलती हैं, राइट, बिना ड्राइवर के, उनके लिए ये पैच 15 किलोमीटर का कॉरिडोर अप्रूव किया गया है, राइट। फिर अभी हमने देखा H1B वीजा के ऊपर फीस लगा दी गई तो इंडिया के काफी जो वर्कर्स है इंपैक्ट होंगे, तो काउंटर करने के लिए चाइना के द्वारा यहाँ पे के वीजा भी लॉन्च किया गया। इवन जब यूएसए के द्वारा 100% टैरिफ लगाया गया था फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे, तो चाइना ने जो 30% वो टैरिफ लगाते थे उसको खत्म कर दिया कि आप हमारी कंट्री में आके अपना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बेचो। तो चाइना काफी हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर रहा है, उन्होंने टैरिफ भी कम कर दिया, एज वेल एज ये की वीजा लॉन्च किया यहाँ पे जो स्टेम प्रोफेशनल्स हैं, राइट, उनको अट्रैक्ट करने के लिए चाइना ने। नेक्स्ट आ जाते हैं छत्तीसगढ़ का बलौद डिस्ट्रिक्ट। ये इंडिया की पहली चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बन गई है, काफी इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड मैरिज फ्री मतलब बच्चों की यहाँ पे शादियां नहीं हो रही हैं, बड़ी 18+ से ही एज में यहाँ शादियां हो रही हैं। एंड ये जो बलौद डिस्ट्रिक्ट है ये छत्तीसगढ़ में है। 436 ग्राम पंचायत एंड 9 अर्बन लोकल बॉडीज है यहाँ पे। यूनिसेफ का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलता है एंड फर्दर टारगेट है कि पूरे छत्तीसगढ़ को 2029 तक हम यहाँ पे चाइल्ड मैरिज फ्री बनाने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए, फिर इसी के अलावा स्टूडेंट्स याद रखेंगे वंदना गुप्ता, टेक अ नोट, वंदना गुप्ता ये कंट्रोलर जनरल बनी है ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट। देन अमिता चौधरी ये वो पहली वीमेन बन गई, फर्स्ट वीमेन इंडिया से ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो कि चेयर करेंगी यूएनईपी के यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के FI ग्लोबल सस्टेनेबल इंश्योरेंस बॉन्ड को। देन विराल दमानिया जी, इनको अभी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है इंडसइंड बैंक का। देन अगर हम बात करें ITBP, इनके डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं, प्रवीण कुमार। अगर मैं बात करूं CISF के डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं, प्रवीर रंजन।
प्रवीर रंजन अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, थॉमस कुक इंडिया, इन्होंने भी एक एमओयू साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ ताकि ट्रैवलर्स का फीडबैक लिया जा सके। देखो थॉमस कुक इंडिया क्या है, ये एक ट्रैवल कंपनी है, राइट, जो कि फॉरेन ट्रैवलर्स को इंडिया में लाती है घूमने के पर्पस से। तो अब ये क्या कह रही है कि हमने 3 साल का एक एमओयू साइन किया जिसके अंदर हम फीडबैक लेंगे उन ट्रैवलर्स से जो फॉरेन ट्रैवलर्स होते हैं कि इंडिया में कैसी सर्विसेज हैं, क्या सिक्योरिटी देखने को मिलती है, राइट, कैसे असेसिबिलिटी है, क्या क्या सर्विसेज यहां पर देखने को मिलती है, कैसा कल्चर है, करेक्ट। तो प्रॉपर एक फीडबैक फॉर्म रहेगा जिससे पता लगेगा कि इंडिया में किस चीज पे हमें काम करना चाहिए एंड क्या और हम बेटर कर सकते हैं ताकि और टूरिज्म को हम इंडिया में अट्रैक्ट कर सकें। मूविंग ऑन टू इंटरनेशनल अफेयर्स स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं 42nd एडिशन ऑफ ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की। ये असेंबली थी, कहां पर हुई, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई। आई रिपीट, 42nd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन असेंबली 23 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक ये असेंबली हमें देखने को मिली। 192 मेंबर स्टेट्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिला एंड इंडिया की तरफ से रमेश कुमार जो कि सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इन्होंने यहां पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया। इंडिया को रीइलेक्ट कर लिया गया है एंड पार्ट 2 यहां पे हम दर्शाते हैं कि इंडिया, एक तो इंडिया की यहां पे कई सारी कंट्रीज को रिइलेक्ट किया गया 36 मेंबर काउंसिल को, एंड यहां पर इसके रीइलेक्शन से इंडिया का होगा क्या, इंडिया यहां पे और बेटर काम करेगा इंश्योर करने के लिए एक ग्लोबल एंड इंक्लूसिव ट्रांसपोर्ट। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है एडवर्ड, ये डायरेक्ट याद रखेंगे, इसको नोट करेंगे, एडवर्ड वार्नर अवार्ड 2025 का। ये एडवर्ड वार्नर अवार्ड किनको दिया गया, अफ्रीकन सिविल एविएशन कमीशन को सम्मानित किया गया यहां पे एडवर्ड वार्नर अवार्ड से। ये है 42nd ICAO असेंबली, राइट, टेक अ नोट ऑफ इट। फिर आ जाते हैं WSSF 2025 जो कि कुआलालंपुर मलेशिया में हुई। ये WSSF क्या है, ये है वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम एंड ये कुआलालंपुर मलेशिया में हमें देखने को मिली, ये लोकेशन है एंड इसको इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन के द्वारा होस्ट करा गया। कब से कब तक, 29 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक इसको होस्ट किया गया कुआलालंपुर मलेशिया में। इसकी एक थीम याद रखेंगे, शेपिंग सोशल सिक्योरिटी फॉर अ वर्ल्ड ट्रांजिशन एंड इंडिया के द्वारा इंडिया को एक अवार्ड भी रिसीव हुआ जो कि है ISSA अवार्ड 2025 का फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि हम सोशल सिक्योरिटी कवरेज के ऊपर काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव काम कर रहे हैं एंड इवन इंडिया का अगर आपको याद हो इंश्योरेंस फॉर ऑल एक 2047 का इनिशिएटिव भी है जहां पे हम चाहते हैं कि इवन इन द रिमोट एरियाज इंश्योरेंस यहाँ पे लोगों तक पहुंच सके। यहीं पे आप देखेंगे डॉक्टर मोहम्मद अजमान, ये पर्सको को रिइलेक्ट किए गए प्रेसिडेंट के तौर पे एंड यहाँ के ट्रेजरर रहेंगे जॉन मार्क वेंडनबर्ग, ONEM को रिइलेक्टेड किए गए हैं। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं RBI ने ग्रांट किया SRO स्टेटस टू फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, FIDC को यहाँ पे अभी रिसेंटली SRO स्टेटस दिया गया है। SRO स्टेटस होता है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस एंड FIDC बेसिकली ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जो कि लोन एंड एसेट फाइनेंसिंग NBFCs को रिप्रेजेंट करती है। यहीं पे अगर हम देखें इसके अंदर 400 से भी ज्यादा NBFCs हमें देखने को मिलते हैं एंड इसके अंदर जो SRO मेंबरशिप रहेगी वॉलंटरीली रहेगी उनके एलिजिबल मेंबर्स के लिए। अब SRO इससे होगा क्या, बेसिकली इससे जो मेन एम रहेगा, इसको जो ग्रांट किया गया है SRO स्टेटस, इसका एम क्या है कि कोड ऑफ कंडक्ट को मेंटेन करने का काम किया जाएगा, राइट। जो ये कंपनीज है उनका कोड ऑफ कंडक्ट तरीके से हो सके, वहां पे जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है वो प्रॉपर तरीके से वो उसको फॉलो कर सके। तो इसीलिए यहाँ पे ये SRO स्टेटस दिया गया है FIDC को। किसके द्वारा दिया गया, RBI के द्वारा दिया गया है। एज ऑफ नाउ अगर हम देखें एमफिन, साधन, एमफिन एंड फेस, इन 3 को यहाँ पे अभी SRO ग्रांट किया जा चुका है एंड मिनिमम नेटवर्थ यहाँ पे 2 करोड़ होना चाहिए फॉर दिस। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, RBI ने इंपोज की पेनल्टीज ऑन MX जो कि है अमेरिकन एक्सप्रेस एंड HDB फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर मैं MX की बात करूं तो इनके ऊपर कितनी पेनल्टी इंपोज की गई है RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, तो इनके ऊपर 31.8 लाख रुपीस की पेनल्टी इंपोज की गई है। वहीं पे अगर हम देखें HDB फाइनेंशियल पर 4.2 लाख रुपीस की पेनल्टी इंपोज करी गई। मूविंग ऑन, इकोनॉमी एंड बिजनेस पर आते हैं। जोमैटो एंड HDFC पेंशन, इनके द्वारा एक NPS मॉडल फॉर डिलीवरी पार्टनर्स लॉन्च किया गया है। नेशनल पेंशन सिस्टम के तौर पर ही ये लॉन्च किया गया है अंडर PFRDA की गाइडेंस से। अब देखो ये होगा क्या है, यहाँ पर आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर ये खोला जाएगा। इससे क्या होगा, जो बेनिफिट यहाँ पे डिलीवरी पार्टनर्स जो गिग वर्कर्स हैं उनको मिलेगा, अगर वो जॉब चेंज करते हैं तो दूसरी जॉब में भी उनको ये बेनिफिट देखने को मिलेगा। विद इन 72 आवर्स अगर हम देखें यहाँ पर 30,000 से भी ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स के द्वारा ये परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर खोला गया एंड जोमैटो का टारगेट है कि 1 लाख परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर्स या फिर 1 लाख पार्टनर्स को हम यहाँ पे रजिस्टर कर सकें बाय दिसंबर 2025। इससे सोशल सिक्योरिटी बेटर होती हुई दिखेगी।
ठीक है। फिर इसी के अलावा टाटा मोटर्स, स्टूडेंट्स टाटा मोटर्स के द्वारा अभी एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किए गए हैं, वो कौन है? शैलाश चंद्र जी, 3 साल के तौर पे यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। इसी के अलावा अगर हम देखें किनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, वो है वेंकटरा रमनी जी, एंड इनको 2 साल का यहाँ पे एक्सटेंशन देखने को भी हमें मिला है। फिर इसी के अलावा अगर आपसे पूछा जाए आयरन बीम ये एक लेजर बेस्ड सिस्टम है जो कि डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस से स्ट्रेंथन करता है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इजराइल के द्वारा। आयरन डोम भी इन्हीं का था, ठीक है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा अभी एक डील दी गई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 62,370 करोड़ रुपीस की ये डील रहेगी फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। नेक्स्ट साइंस एंड टेक पर आते हैं। गुड लक इंडिया, इन्होंने एक एमओयू साइन किया बीएटीएल एंड एक्सीडेस के साथ फॉर एएमसीए प्रोग्राम, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। यहाँ पे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बनाने का काम किया जाएगा, उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाएगी, उनको डिजाइन किया जाएगा, राइट। सो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए ये एमओयू साइन किया गया। ट्राइपार्टाइट एमओयू है, पहली ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन और तीसरी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, करेक्ट। फिर याद रखेंगे स्मृति मंधाना, इनके द्वारा फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी बनाई गई इंडिया की। इसी के अलावा अगर हम देखें तो अभी इंडिया को कई सारे मेडल्स और अवार्ड्स मिले हैं या फिर इंडिया ने कई जगह जीता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने 7th SAFF अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप होती है, यहाँ पे इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया बाय 4-1 इन द फाइनल। देन इंडिया ने 7 मेडल जीते एट द पैरा वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप। फिर इसी के अलावा इंडिया ने क्रिकेट से रिलेटेड अगर हम देखें तो एशिया कप को जीत लिया, मेंस एशिया कप को, पाकिस्तान को फाइनल्स में हरा के। ये 9th एडिशन था एशिया कप का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज पे स्टूडेंट्स, वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। एनिमल्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए एंड उनके इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। 100th एनिवर्सरी हमने इसकी ऑब्जर्व करी। थीम रहेगी सेव एनिमल्स सेव द प्लैनेट। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, 2 से 8 अक्टूबर तक ऑब्जर्व करते हैं। वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए एंड इंडिया की रिच बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। 71st एडिशन इसका हमने ऑब्जर्व किया गया और इसकी एक थीम रहेगी सेवा पर्व। पहली बार 1957 में इसको ऑब्जर्व किया गया। फिर इसके बाद आ जाते हैं वर्ल्ड स्पेस वीक, 4 से 10 अक्टूबर तक ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड अब हम देख रहे हैं, हम मून पे अपना बेस बनाने की बात कर रहे हैं, हम मार्स पे जाने की बात कर रहे हैं, रीयूजेबल रॉकेट्स यहाँ पे लॉन्च किए जा रहे हैं, सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बनाया जा रहा है, राइट। तो स्पेस के ऊपर बहुत काम किया जा रहा है। तो सेफ को प्रमोट करने के लिए इवन स्पेस में अगर हम देखें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया की तरफ से 100% अलाउ किया हुआ है, राइट। तो स्पेस एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है आज के टाइम पे, काफी ग्रोथ देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में यहाँ पर। तो इसको ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड स्पेस वीक ऑब्जर्व किया गया 4 से 10 अक्टूबर तक। टेक अ नोट ऑफ द स्टूडेंट्स। एंड लिविंग इन स्पेस यहाँ पे इसकी थीम रहेगी, लिविंग इन स्पेस। इसके बाद स्टूडेंट्स, अच्छा इसी के अलावा अगर जैसे हम देखें 25 सितंबर को हमने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड मैरीटाइम डे, 25 सितंबर को ही हमने ऑब्जर्व किया अंत्योदय दिवस, 25 सितंबर को ही वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे ऑब्जर्व किया। 26 सितंबर की अगर मैं बात करूं तो 26 सितंबर को हमने ऑब्जर्व किया यूरोपियन डे ऑफ लैंग्वेजेस, 26 को ही वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे ऑब्जर्व किया। फिर 26 को ही हमने ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। फिर 27 को ऑब्जर्व किया वर्ल्ड टूरिज्म डे, 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे ऑब्जर्व किया, 29 को वर्ल्ड हार्ट डे ऑब्जर्व किया, राइट। तो ये मार्क करेंगे। फिर आ जाते हैं स्टेट न्यूज के ऊपर स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट स्टेट न्यूज रहेगी, इसको मार्क करके चलेंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा अभी ई बॉन्ड सिस्टम लॉन्च किया है फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन। इससे जो 500 रुपए के जो आपके डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होते थे, राइट, जो आपका 500 रुपए का बेसिकली हम बोले स्टैम्प पेपर्स होते थे, वो एलिमिनेट होते हुए दिखेंगे। अब ये प्रोसेस डिजिटाइज होती हुई दिखेगी, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड सिस्टम लॉन्च किया गया है फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन एंड महाराष्ट्र 16 स्टेट बन गई है जिन्होंने इस डिजिटल सिस्टम को यहाँ पे अपनाया है। सो काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे, चीजें हम डिजिटाइज होती हुई यहां पर हमें दिखेंगी। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होगी। किन्होंने जीता फर्स्ट एवर चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप? ये फर्स्ट एडिशन है, इनॉग्रल एडिशन भी इसको कह सकते हैं। कहां पर हुआ था? रियाद सऊदी अरेबिया में इसको देखने को मिला था। एंड किसके द्वारा कराया गया था? ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन के द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया। किसके द्वारा जीता गया? मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया, जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर है। नेक्स्ट, इंडियन मेंस एंड वीमेंस टेबल टेनिस टीम्स इन्होंने क्वालिफाई किया वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए। दैट इज शेड्यूल टू बी हेल्ड कहां पर? दैट इज शेड्यूल टू बी हेल्ड इन लंदन, यूके। मार्क करेंगे इसको। फिर आ जाते हैं 40वां एडिशन ऑफ द हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स
ये कहां पर हुई? हंगरी में हुई। किसके द्वारा जीती गई? लैंडो नॉरिस के द्वारा इसको जीती गई, एंड ये मैकलेरन के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट, इन अगस्त वेयर डिड इंडियन ओपन वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज मीट हुई, जहां पे इंडिया ने मार्क किया फर्स्ट एवर होस्टिंग ऑफ दिस इवेंट। तो ये इवेंट कहां पर हुआ? भुवनेश्वर ओडिशा में ये हमें देखने को मिला, एंड इंडिया के द्वारा पहली बार इसको होस्ट किया गया। ये 1 डे मीट थी, जहां पे 150 एथलीट्स ने फ्रॉम 17 कंट्रीज पार्टिसिपेट किया, एंड टोटल प्राइस पूल यहां था $25,000 का। नेक्स्ट, हु वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस इंडिविजुअल कंपाउंड आर्चरी एट द वर्ल्ड गेम्स, जो कि चेंगडू चाइना में हुई। तो किसके द्वारा जीते गए ब्रॉन्ज मेडल? ऋषभ यादव जी के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड इंडियाज अंडर-20 वीमेंस फुटबॉल टीम क्वालिफाइड बाय डिफीटिंग म्यांमार इन द फाइनल ग्रुप डी क्वालिफाइंग मैच, जो कि म्यांमार में ही हुआ था। तो ये फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, किस इवेंट के लिए? AFC अंडर-20 वीमेंस एशिया कप 2026 के लिए था। नेक्स्ट, 19 ईयर ओल्ड एस रोहित कृष्णा, ये ऑफिशियली बन गए इंडिया के 89th ग्रैंड मास्टर। ये बन गए ऑफिशियली 89th चेस ग्रैंड मास्टर आफ्टर अर्निंग हिज फाइनल ग्रैंड मास्टर नॉर्म एंड अचीविंग एन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन रेटिंग ऑफ 2516। नेक्स्ट, अभी इनॉग्रल खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल हमें देखने को मिला जम्मू एंड कश्मीर में, डल लेक पे यहाँ पे इसके इवेंट होंगे, राइट। एंड डल लेक कहाँ पर है? श्रीनगर में। एंड डल लेक ही बेसिकली, डल लेक के ऊपर शिकारा ये लोगो था यहाँ पर बेसिकली फॉर दिस इनॉग्रल, मतलब फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का। नेक्स्ट आ जाते हैं चेस ग्रैंड मास्टर विंसेंट केमर, इन्होंने क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स को जीत लिया इन अगस्त इन चेन्नई तमिलनाडु। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये जर्मनी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पेनिश मार्क मार्किस, ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको? ये रिप्रेजेंट करते हैं दुकाती लिनोवो टीम को, एंड इन्होंने फर्स्ट एवर ऑस्ट्रियन ग्रैंड पिक्स को यहाँ पे जीत लिया है, जो कि मोटो जीपी ऑस्ट्रियन ग्रैंड पिक्स है। मोटो जीपी क्या होता है? बाइक रेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं किन्होंने क्लिंच किया टॉप मेडल एट द 2 प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल टेबल टेनिस वर्ल्ड पैरा टेबल टेनिस इवेंट, जो कि अगस्त के महीने में हुई इन वॉशिंगटन DC। तो हु क्लिंच द टॉप मेडल? भाविना पटेल के द्वारा यहाँ पे टॉप मेडल क्लिंच किया गया। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 18th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि एक एनुअल कॉम्पिटिशन था एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पे फॉर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स हेल्ड इन अगस्त। तो मुंबई महाराष्ट्र में ये हमें देखने को मिला था 18वां एडिशन, 18th एडिशन। नेक्स्ट, वेयर डिड इंडिया ने होस्ट किया कहां पर एशियन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी को फॉर द फर्स्ट टाइम, जो बिगेस्ट इंटरनेशनल विंटर स्पोर्ट्स इवेंट है। तो इंडिया ने इसको होस्ट किया कहां पर? उत्तराखंड में, एंड आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। नेक्स्ट, वेटरन इंडियन क्रिकेटर चिश्तावर अरविंद पुजारा, इन्होंने अनाउंस की रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्मेट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट इन अगस्त, जो होल्ड करते हैं रिकॉर्ड्स फॉर 525 बॉल्स, जो कि सबसे ज्यादा बॉल्स फेस्ड बाय एन इंडियन इन अ टेस्ट इनिंग। नेक्स्ट, मेंशन द टीम दैट वन द दुरंत कप। दुरंत कप आपका किस स्पोर्ट से रिलेटेड होता है? फुटबॉल से रिलेटेड होता है। तो अभी रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने इसको जीत लिया है, एंड इन्होंने किनको हराया? इन्होंने डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब को फाइनल्स में हराया टू विन द टाइटल, एंड ये दुरंत कप का 134वां एडिशन था, ये भी याद रखेंगे। मूविंग ऑन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 19th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप, जो कि अगस्त के महीने में होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, सी सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि जो ये वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप है, ये वर्ल्ड आर्चरी कराएगा लॉजेन स्विट्जरलैंड में। नहीं, लॉजेन स्विट्जरलैंड में तो इनका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड आर्चरी का। कहां पर होगा ये होगा विनीपेग। विनीपेग कहां पर है? कनाडा में। वहां पे ये इवेंट हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं प्लेयर्स धर्मवीर एंड प्रीतिपाल, इनको चूज किया गया एज द फ्लैग बियरर्स फॉर द इंडियन कंटिजेंट किस चैंपियनशिप के लिए, जो कि अभी दिल्ली में हमें देखने को मिल रही है। तो ये किस चैंपियनशिप के लिए यहाँ पे चूज किए गए? तो ये आपका कॉमनवेल्थ पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप के लिए फ्लैग बियरर्स यहाँ पे सेलेक्ट किए गए थे। नेक्स्ट आ जाते हैं जूलियन वेबर, ये रिप्रेजेंट करते हैं किस कंट्री को, जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी डायमंड लीग में, जो कि जेवलिन थ्रो का इवेंट है, ज़ुरिच स्विट्जरलैंड में हुआ था। नीरज चोपड़ा ने सेकंड पोजीशन यहाँ पे सिक्योर करी। तो जूलियन वेबर ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इज आवर होमवर्क सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू BCCI president. Second question, tell me recently which edition of Asia Cup was won by India and who won the trophies here, right? Various trophies. Say for example, who won the best player of the match, man of the tournament, right? Give me those. Third question, which edition of Indian
Defense Service of Engineers Day was observed recently? Right? Tell me that. Which edition of which was observed recently? Then fourth question. Recently, one Indian Coast Guard ship, right? That is the first Adamya class. That is the first Adamya class fast patrol vessel. Correct? That was commissioned at Paradip Port. Name that. Name that Indian Coast Guard ship. Then fifth question. Tell me recently, when do we observe World Bamboo Day? When do we observe International Equal Pay Day? When do we observe World Cleanup Day? And when do we observe World Alzheimer's Day? So these are your homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.